Hello, good morning everybody. Today we are going to study a physics topic known as laws of motion. There are mainly three laws of motion which we will cover. Can anybody tell who stated these laws? Okay, we will study that. Laws of motion are stated by Newton. Full name is Sir Isaac Newton. Here is some interesting facts about Sir Isaac Newton. Isaac Newton, in full, Sir Isaac Newton, born on December 25th, 1642, on England, and died on March 20, 1727, in London. Okay. Sir Isaac Newton, FRS, was an English polymath active as वो क्या थे इंग्लिश पॉलीमैथ एक्टिव एज ए मैथमेटिशियन वो एक मैथमेटिशियन थे फिजिसिस्ट थे एस्ट्रोनॉमर थे अल्केमिस्ट थे थियोलॉजिकन थे एंड ऑथर थे हु वाज डिस्क्राइब्ड इन हिज टाइम एज ए नेचुरल philosopher. He was a key figure in the scientific revolution and the enlightenment that followed. सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन तो स्टेटेड किए थे और एक चीज जिससे इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिला था वो क्या था ग्रेविटी ग्रेविटी जी ग्रेविटी वो इन्हें डिस्कवर किए थे हम लोग वो उनका वो कहानी सुने थे वी ऑल नो दैट स्टोरी दैट आइजैक न्यूटन sat under a tree, a apple fell from the tree on his head. So from that he has enlightened that there is gravity working on every body. Can you know the formula of gravity? mg. Gravity. Gravity is mg. m is mass of the object. g is gravity. Gravity कितना है 9.8. Okay. लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन क्या है थ्री लॉज ऑफ मोशन है फर्स्ट लॉ क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया लॉज ऑफ इनर्शिया लॉज ऑफ इनर्शिया में क्या है ए बॉडी सिंपल सा टॉपिक है क्या है लॉज ऑफ इनर्शिया लॉज ऑफ इनर्शिया में इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will remain at rest if a body is in motion it will remain in motion unless and until an external unbalanced force act upon it. This is a simple topic simple theory. देखिए ये बॉल है this is a ball is in rest and it will remain at rest unless and until somebody kicked it. Somebody kicked it means somebody applied a force on the ball on this direction so the ball move forward. This means unless and until an external force, this is an external force, this is not the force comes inside from the ball, it is an external force applied on this ball so that the ball move from its position. Okay. क्या लिखा है पढ़ देते हैं an object at rest remain at rest an object at rest will remain at rest an object in motion remains in motion at a constant speed and in a straight line unless and until acted by an external force. यहाँ पर कट गया है शायद एक्सटर्नल फोर्स बॉल एट रेस्ट है बॉल इन मोशन है क्यों मोशन में आ गया एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट. ओके अभी मैथमेटिकल देखेंगे ये क्या है फोर्स नेट
नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ये पहले क्या था, इसमें नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। फिर क्या हुआ, इसे एक्सटर्नल फोर्स मिल गया तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, नेट फोर्स मूव हो गया। तो यहाँ पर स्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ये हो रहा है कि अनलेस एंड अनटिल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड नहीं होगा, तभी तक वो बॉडी विल मेंटेन इट्स कंटिन्यूअस पोजीशन। इफ इट इज रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन। क्या लिखा है, एफ नेट इज द नेट फोर्स और द सम ऑफ द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। Thus, Newton's first law formula reads: the sum of all forces is zero when the velocity is constant. This indicates a state of equilibrium or balance. This unit is Newton. Force का क्या है unit? Newton. It is important to recognize that equilibrium does not mean there is no motion. If the object under observation is in motion, it will continue that motion on its current path and no changes in its velocity. If the object is rest at the velocity, it is zero and stays at zero. इसका मतलब क्या है, मतलब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम मतलब नहीं कि रेस्ट में है, ये बॉल यहाँ पर है, ये बॉल अगर मूव कर रहा है ऑन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल समबडी ऑब्स्ट्रक्ट इन दिस वे। ओके, अगर वो बॉडी स्टेडी में है, मतलब यहाँ पर ही है, बॉल स्टेडी है, वो स्टेडी ही रहेगा, मतलब इस कंडीशन यहाँ पर इस जगह पर रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा अनलेस अनटिल some external force या somebody kicked, like in the previous picture, if somebody kicked it so that it will move forward. अभी ये वाला एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो, ए बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। ये छत से एक बॉल हैंग हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, छत से एक बॉल हैंग हो रहा है, तो बॉल नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बॉल का तो वजन है, वो नीचे जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो लॉ क्या है, बोलता है इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ ए बॉडी इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन। कंडीशन इज फोर्स नेट इज जीरो। Okay. Now in this condition, a ball is hanging from the ceiling. So this string is attached to this ball, and the weight of the ball is falling downward. I have told in the first slide that the gravity is mg. Here the weight is equals to mg, mass of this ball and the gravity. But why this ball is not falling from this ceiling? Because a tension is acting on the upward direction. A tension is acting on the upward direction, which equals to this mg. So this ball remain at rest. Okay. Now we will take another example. Let's say एक मिनट में erase कर देता हूँ इसे. Let's say here is a block. एक पत्थर है, ठीक है. On this ground there is a block, and someone is trying to push it on this way. But why this block will not move forward? Can anybody tell? And when this block will move forward? This block will not move forward unless and until
this force applied will be greater than this frictional force. Here is a frictional, यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है ना ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ. अगर ये जो फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वे जब फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तब ये ब्लॉक आगे फॉरवर्ड मूव होगा. तभी तक जब तक ये चीज फ्रिक्शन से यहाँ पर जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जब तक ये फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो रहा है तब तक ये ब्लॉक यहाँ पर स्टेडी रहेगा. लाइक दिस बॉल, यहाँ पर somebody is pushing, यहाँ पर the tension is in upward direction. Is tension by the string. ओके अगर ये बॉल का फॉर एन एग्जांपल बॉल का वेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब मास ज्यादा हो गया, तो मास बॉल का मास ज्यादा होगा तो क्या हुआ, तो वेट ज्यादा हो जाएगा. अगर ये स्ट्रिंग का टेंशन, मतलब वो स्ट्रिंग इतना टेंशन हैंडल नहीं कर सकता है, यहाँ पर इतना इट कैन नॉट होल्ड दिस मच ऑफ टेंशन. सो क्या होगा, वो स्ट्रिंग बीच से कट जाएगा तो बॉल नीचे आ जाएगा. इसका मतलब जब तक एक बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब फोर्स नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द डाउनवर्ड फोर्स, तब तक द ऑब्जेक्ट is maintain its condition in a equilibrium state. Okay, got it? This word equilibrium is not means that it will be remains in steady. Let me tell you, for example, a car is moving in this direction. A car is moving in this direction and it will not stop unless and until someone breaks it. Break mean what? Some force in this opposite direction. Unless and until somebody hit the brakes, the car will move forward. Okay, got the point? Okay, next. Now we'll study the second law, law of acceleration. What it is stated? It is stated that the acceleration of an object depends on the mass of the object and the amount of force applied on it. Means the acceleration is directly proportional to the mass of the object and the amount of force applied. See in this picture, somebody is pushing this car. Let's say if he is applying some force to this car and the same amount force to the bicycle, can you say who will move forward first and more easily? The bicycle only, because the bicycle weight is far more less than this car. So the laws of acceleration stated that acceleration of an object depend on the mass of the object and the amount of force applied. So if the bicycle has less mass, so the bicycle will move forward on this same amount of force which is applied to this car. Let me say for this car is applied, firstly it will apply 5 Newton of force. Now it is applied 500 Newton of force. So this car will move forward also. Why? The acceleration will also directly proportional to the amount of force applied. Okay. This law, what it defines? It defines a force to be equal to the change in momentum, mass times velocity. For change in time, momentum is defined to be mass of the object times of an object times its velocity. Momentum, what is momentum? I will say it clearly, listen properly. Momentum is the product of mass and its velocity. This is called momentum. This is mass of the object, its velocity. मोमेंटम का एक एग्जांपल देता हूं, आप क्लियरली सुनिए. आप रास्ते में जा रहे हो,
You are being hit by a truck traveling at a speed of 5 km per hour, and your friend, he has been hit by a bicycle moving at 5 km per hour. Who will be more damaged? Who will be more damaged between you and your friend? आपको ट्रक ने टक्कर मारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, आपके दोस्त जा रहा था 5 किलोमीटर के प्रति घंटे से, साइकिल आ रहा था, उसको टक्कर मार, किसका ज्यादा नुकसान होगा, आपका या आपका दोस्त का? आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप मोमेंटम के बारे में नहीं पढ़े थे। मोमेंटम क्या बोला था? मास टाइम्स वेलोसिटी। मास इज इम्पोर्टेंट। ट्रक का मास ज्यादा था इसलिए आपका हड्डी टूट गया, वो बाईसाइकिल का मास कम था इसलिए बाईसाइकिल वाले का हड्डी टूटा, आपका फ्रेंड का हड्डी नहीं टूटा। समझ में? सो मोमेंटम स्टेट्स दैट the mass times velocity, whose mass will be greater, the momentum will be greater. It is directly proportional to mass, and it is also directly proportional to the velocity. Mass times velocity. Momentum is mass times velocity. Force is directly proportional to the rate of change of momentum applied. Okay. अभी मैथमेटिकल क्या है देखेंगे। मैथमेटिकल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है इसका फॉर्मूला। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला, लॉज ऑफ एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम। थर्ड लॉ क्या स्टेटेड करता है? एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ सभी जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। We all know this is a common thing which everybody knows. So, but if you want to deeply know about thing, just look into the picture. I will explain it to you in this picture. Okay. This block thing I have told you from the first law. This is what it is gonna be. Now, this is a block. Somebody is pushing this block. Okay. On which direction? On the forward direction. F2 is the force in forward direction. But the block is exerting the same amount of force, F1, on the opposite direction. Okay. When the force on F1, the opposing force, will be lesser than the forward force, then this block will move. This is stated in the first law, laws of inertia. The block will remain in position unless and until the unbalanced force act upon it. But what is action reaction says? Action reaction says that, so if you are exerting 5 Newton of force on this object, it will remain rest until and unless and 5 Newton of external force is applied. Okay, in the string thing, look in the string thing. The downward force is mg. The upward force is also equals to mg. The tension is mg. So whatever force you are applying to the body, it has an equal and opposite reaction. Okay, this is called action and reaction. This is the third law of Newton. Third law. Force 1 equals to minus
ये लिखा है, क्या लिखा है, F1 इक्वल्स टू माइनस F2, मतलब ये इसका अपोजिट फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़े थे सेकेंड लॉ में, क्या है सेकेंड में, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, जो भी अगर आगे जा रहा है, अगर आगे जा रहा है उतना ही अमाउंट का फोर्स, वो भी आपको पीछे ढकल रहा है, कितना, माइनस m2a2। दिस इज कॉल्ड mass into acceleration, action and reaction thing. Okay. Okay, we have got to know about three laws of motion. First law is laws of inertia, और एक बार रिपीट करेंगे हम, क्या है लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या है, बॉडी इज इन रेस्ट, विल रिमेन इन एट रेस्ट unless and until an external force applied to it, and if a body is in motion it will remain in motion unless and until it will act when an unbalanced force to it. लॉज ऑफ एक्सेलरेशन क्या करता है, क्या स्टेट करता है, लॉज ऑफ एक्सेलरेशन स्टेट करता है मोमेंटम, ठीक है। और थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज। प्लीज like, share, subscribe, do comment below if you need any topic to be particularly be studied. Okay, and search my channel navodayan2012. Thank you, have a good day.